रेडी? ये नेम हो पाएगा कि मानस नमस्कार नो मानस नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे साथ में इस समय 3 लोग हैं, फिल्म से जुड़े हुए सब लोग हैं, और ये अनशेड्यूल्ड पीसी थी, लेकिन एक हमारे साथ उपलब्ध हुए तो हमने मीडिया से सबका संपर्क कराने के लिए कोशिश की। फिल्म का नाम भी है इंटरेक्शंस, और ये बेसिकली इंटरेक्शन है, क्योंकि अनशेड्यूल है तो इंटरेक्शन ही है सर आपका, जबकि फिल्म का नाम भी वही है। और पहले मुझे लगा कि जो उधर से अनुरोध आया तो भी उसमें लगा कि ये इंटरेक्शन कराना है, तो हमने लगा ठीक है तो मिला देंगे, लोगों से इंटरेक्शन करा देंगे। बाद में पता चला कि फिल्म का नाम ही है इंटरेक्शंस। अच्छी तो बात है, anyway, हमारा सब्जेक्ट मिल गया और क्या चाहिए। यस सर, यस सर। तो हमारे साथ हैं मिस्टर मानबिंदु रथ सर, प्रोड्यूसर हैं, ये इंडिया से हैं। इसमें पूरे काफ़ी बाहर से भी लोग हैं सर इसमें इन्वॉल्व। हाँ, 12 कंट्रीज से लोग इस फिल्म में इन्वॉल्व हैं। और मिस्टर रुपेश कुमार साहब हैं, चीफ मैनेजर हैं कारपोरेट कम्युनिकेशन गेल इंडिया लिमिटेड के, जो मेन पार्टनर हैं इस फिल्म के लिए। मिस्टर प्रतीक मजुमदार सर हैं हमारे साथ में, जो प्रोडक्शन कंसल्टेंट इंडिया हैं, आर्ट फॉर द वर्ल्ड। तो आप सब लोग हैं। मैं सबसे पहले मानबिंदु सर से अनुरोध करूंगा कि आप सर फिल्म के बारे में और इसका आइडिया क्या है इंटरेक्शंस का, उसके बारे में सर अपने विचार साझा कीजिए, और बाकी सबसे भी अनुरोध करेंगे। बाद में सर लोगों के जो सवाल होंगे उसके काइंडली जवाब दीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। फिल्म और एंटरटेनमेंट से तो होंगे ही यहाँ पे जर्नलिस्ट। Yes, कोई एनवायरनमेंट से भी है क्या? एनीवन हु फोकसेस ऑन एनवायरनमेंट? वंडरफुल, सो दिस शुड बी सो मच मोर रेलिवेंट नाउ। देखिए, इंटरैक्शंस एक ऐसी फिल्म है जिसको 12 फिल्म मेकर्स ने 12 शॉर्ट्स बनाए हैं, शॉर्ट फिल्म्स 8 to 10 मिनट्स का, फ्रॉम 12 डिफरेंट कंट्रीज इन 12 डिफरेंट डायलेक्ट्स। ओके, so you have Morocco, Japan, Brazil, Iran, Armenia, India, France, Italy, so like that. Now put together it's a 90+ minutes full length film. इस फिल्म का सब्जेक्ट है, जैसे कि हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या क्लाइमेट चेंज जिसके वजह से हो रहा है, एनिमल राइट्स का इश्यूज चल रहा है, इन सब पे फोकस लाने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ के लीडिंग फिल्म मेकर्स को आर्ट फॉर द वर्ल्ड, एक NGO है बेस्ड आउट ऑफ यूरोप, बेसिकली स्विट्ज़रलैंड, जेनीवा, दे हैड कॉन्टैक्टेड एंड ब्रॉट टुगेदर 12 फिल्म मेकर्स ऑन टू वन प्लेटफॉर्म टू मेक दिस फिल्म, जिसका नाम है इंटरैक्शंस। सरप्राइजिंगली ब्रीफ भी वही था, that this film should lead to certain interactions between people। ये जो मुद्दा है, ये सब्जेक्ट है, ये खुले में आना चाहिए और लोग इसके बारे में डिस्कस करने चाहिए। ठीक है, इस फिल्म का थीम जो हमको एज फिल्म मेकर्स मिला हुआ था वो था मैन एनिमल रिलेशनशिप्स पे। तो ये जो मैन एनिमल रिलेशनशिप कहने सुनने में अच्छा लगता है, वो हम सब अपने पर्सनल नज़रिए से देखते हैं, बट हाउ डज़ इट इम्पैक्ट द प्लानट इन इट्स एंटायरिटी, ये हम अपनी अपनी नज़रिए से एज डिफरेंट फिल्म मेकर्स उसमें दिखाए हैं। इंडिया से इट वाज द पद्मश्री अवॉर्डी नीला माधव पांडा। सो ये नीला की फिल्म थी, ही हैज़ डायरेक्टेड इट एंड आई हैव प्रोड्यूस्ड इट। So both of us have worked together on this one and it's really close to our hearts. A film is about 9.5-10 minutes long. तो हमारी जो इंडिया वर्जन की फिल्म है, इट्स एलिफेंट इन द रूम उसका नाम है। ये एक वो कहते हैं ना, एक कहावत टाइप का कि एक बहुत बड़ी समस्या है बट कोई उसे एड्रेस करने को तैयार नहीं है। लोग बैठे हुए हैं चारों तरफ एक कमरे के अंदर, पर उन्हें ये पता नहीं कि वो करें तो क्या करें इसके बारे में। इनफैक्ट उनको पहला बताना पड़ेगा कि भाई एक समस्या है, इसको जानो और पहचान लो कि एक समस्या है। बाद में इसको कैसे एड्रेस करना है वो भी बताया जाएगा या आप फिगर आउट कर ही लोगे। सो
That is how the name came up, Elephant in the Room. This is basically a fictional story. It's pure fiction, but it's based on a real true story, absolutely true story, which जो हमारे सामने आया था करीब 3-4 साल पहले. मैं और माधव हम इसके बारे में एक और प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर रहे थे. वी एक्चुअली वांटेड टू मेक अ फुल लेंथ फीचर ऑन दिस. वो था हमारे एक ठंडे बस्ते में था, बट बाहर नहीं आ सका था. तो इसमें हमें जो मौका मिला हमने फट से उसके लिए ऑप्ट किया है. स्टोरी इज़ वेरी सिंपल. एक तरफ हम दिखा रहे हैं थ्रू द आईज ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटी सी लड़की है. एंड ये वो कहानी है, आप लोग मीडिया वाले यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. देयर वाज दिस एलिफेंट हु हैड डाइड व्हेन शी बिट और swallowed a pineapple bomb. वो हुआ था ना इंसिडेंट. हाँ करेक्ट, केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में. तो वो जो इंसिडेंट हुआ था ये तब की कहानी है कि वो इंसिडेंट होता है और पैरेलली एक घर में फेस्टिविटीज़ चल रहे हैं. एक छोटी सी बच्ची है, उसकी जो माँ है शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ सेकेंड चाइल्ड. तो उनकी दूसरी वाली बच्ची के लिए गोद भराई का उनका एक टिपिकल सा रस्म चल रहा है. लोग बाग आए हुए हैं, सब उसकी प्रेग्नेंट जो वुमन है उसको पूछ रहे हैं कि भाई कैसे हो, क्या हो, ये लो दूध पी लो, जूस पी लो, ये खा लो, वो खा लो. और खुशियों का माहौल है. सडनली ये न्यूज़ आता है और लोग अपने सोशल मीडिया फ़ोन वोन पे देख रहे हैं. ये लड़की वहाँ देखती है. देख के अचानक से शी गेट्स डिप्रेस्ड, शी गेट्स अफेक्टेड. वो बोलती है कि यार देखो ये भी एक ये भी एक प्रेग्नेंट मदर है. चलो ह्यूमन नहीं है, एलिफेंट है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है. उसका आपने मुंह उड़ा दिया पाइनएप्पल बॉम्ब खिला के, वो मर गई बेचारी 3-4 दिन तड़प के. और यहाँ पे आप भी एक प्रेग्नेंट हो, आपको देखो कितने लोग पूछ रहे हैं. तो हम इंसान के हम झूठे हैं. मैं ऐसे इंसान से बात नहीं करती, आप लोग सब इस तरह के हो. सो ये बात तो इस पे उसकी मम्मी बोलती है, उसको अलग लेके खाना खिलाते खिलाते वो बताती है कि देखो इसका एक कम्प्लीटली दूसरा पहलू भी है. तो इस तरह से मत लो इस चीज़ों को. देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ह्यूमंस. सो वो यहाँ पे ये ट्रू स्टोरी बताती है जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 10 years पहले हुआ है. दैट देयर वाज दिस विलेज, अ वेरी बिग विलेज ऑफ 100-150 हाउसेस, यहाँ 600-700 लोग रहते थे इनसाइड अ फॉरेस्ट. वहाँ पे एलिफेंट्स का पॉपुलेशन बढ़ा तो वो फॉरेस्ट उनका टैक्टिकल रूट के बीच में आने लगा. सो मैन और एलिफेंट के बीच क्लैशेस होने लगे. So not out of fear, they were one entire village which overnight took a decision out of a concern and respect for the elephants that let us migrate. वो अपने जो पुश्तैनी ज़मीन, उनका फॉरेस्ट, उनका एग्रीकल्चरल लैंड, उनका घर द्वार संसार वहाँ से छोड़ छाड़ के सारे 600-700 लोग दे मूव टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, जो एनीवेज वाज अ पॉपुलेटेड एरिया. वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे. दे क्विट बीइंग फॉरेस्ट ड्वेलर्स. दे सेड फेयर इनफ, वील बिकम रेगुलर विलेजर्स लाइक अदर पीपल. So they moved entirely, and that thing impacted over 6,500 elephants who had that. It was somehow obstructing. धीरे धीरे ऐसा बढ़ के जैसे खेती वेती करके फैल गया था एरिया. वो पूरा एरिया छोड़ दिए सो ताकि वो एलिफेंट्स खुशी से रह सकें. एंड ये कौन करता है? Someone of a very big heart probably can do it. So as an example, that in itself was an example which was set and it was lauded by the United Nations and a lot of people from around the world. So this was one story which we had made. Similarly, I was there at the world premiere in Rome last month. So we premiered for the first time. Then on, it has been shown across 3 or 4 festivals in Europe. And now today we are having the Asia premiere here, so we are really delighted. आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, should watch the film. Such beautiful man and animal relationships, and if at all we have even 1% interest in film, if we see the kind of interpretations these global filmmakers from all over they have made in this film and brought together 12 different films to form this one singular univocal really loud message about how man and animals can coexist, as well as how deforestation can turn over, or we can do it
We can change it over to afforestation. We can impact the planet in a green way. So a lot of these messages, it's really delightful. So I'm really proud to be a part of the entire production of Interactions. This was mainly sponsored and funded entirely by GAIL, Gas Authority of India Limited. And so Rupesh here is representing GAIL. He's one of the senior most there. And that's Prateek. He is a creative associate to this entire production. Now about GAIL, I just would like to say one thing. ये अभी बात कर रहे हैं तो स्ट्राइक किया. देखिए, GAIL भी इंडियन फिल्म है, हम भी वही इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है. तो GAIL could have easily walked in and say कि यार माधव आप लोग ऐसा मत करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो. क्रिएटिव फितूर सब में होता है, किस में नहीं है? यहाँ इस कमरे में किस में नहीं है? कोई बता सकता है? ये सब में होता है. बट दे आर सच अ सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन. उनकी ओर से हमें टोटल सपोर्ट मिला. एंड कहीं पे उन्होंने दे डिड नॉट से अ सिंगल वर्ड जहाँ पे आइडियली अ फिल्म मेकर शुड ऑपरेट. दे गेव अस टोटल फ्रीडम टू ऑपरेट, एंड थैंक्स टू दैट बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस वी गॉट टोटल फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स एज फिल्म मेकर्स. And likewise, the product has come out remarkable. You should see this film. Just one question. Just sir, just a minute. Rupesh sir, you want to add something? आप लोगों को पता होगा गेल इंडिया लिमिटेड इंडिया का इंटीग्रेटेड इन एनर्जी मेजर है. एंड वी आर लार्जली इन द बिजनेस ऑफ नेचुरल गैस विच इज़ क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल, एंड वी आर डाइवर्सिफाइंग इनटू रिन्यूएबल्स, CBG, compressed biogas, and green hydrogen, etc., which are all clean energies. और environmental responsibility जो है हमारा बहुत बड़ा विजन का एक बहुत बड़ा पहलू है, और उस विजन के पहलू को हम बहुत इम्पॉर्टेंटली उसको लेते हैं और उसको लेके आगे बढ़ते हैं. तो उसका सबसे पहला ये काम है कि अवेयरनेस फैलाया जाए. तो वी हैव बीन परसुइंग द एजेंडा ऑफ अवेयरनेस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, फॉर क्लीन एयर, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, और इसके इर्द गिर्द जितने भी स्टोरीज आते हैं, इम्पैक्टफुल स्टोरीज, वी ट्राई टू सपोर्ट इट. तो अभी का जो है इम्पैक्ट एंड कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट पीपल गेट एक्चुअली titillated by the content which they see, and then only they will be able to take corrective actions in their own life. तो इसलिए इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करना ये हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं. हमने पहले एक फिल्म आई थी कड़वी हवा, जो क्लाइमेट चेंज, वो भी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म थी, नीला माधव जी का ही था, उसको भी हमने सपोर्ट किया था. फिर हमने एक वेब सीरीज़ बनाई थी हवा बदले हंसू, जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में, किस तरह से क्लीन एनर्जी अपनाना चाहिए, किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो हमारे ऑनरेबल पीएम बात भी करते हैं, उसको अपनाएं, ताकि धीरे धीरे एक कलेक्टिव चेंज आए, ताकि जो हम एक सस्टेनेबल लिविंग की ओर अग्रसर हो जाए. तो इसके लिए हमने लगातार हम कोशिश करते रहते हैं कि इस तरह के कंटेंट को प्रमोट करें और अवेयरनेस फैलाएं. और जहाँ तक इंटरेक्शंस के सवाल है, वी हैव बीन एसोसिएटेड इन अ स्मॉल वे. देयर वर लॉट ऑफ ग्लोबल पार्टनर्स ऑल्सो, नॉट ओनली गेल. And UN COP15 is one of the who's patronizing this film, and there are other patron from Switzerland, from Brazil, so there are other partners as well. And हमने भी अपने एक छोटे रूप से इस चीज़ को सपोर्ट किया है, ताकि इस तरह की बात हमारे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में फैले और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर पाएँ. और स्टोरी टेलिंग से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है इसके लिए. तो हम इस तरह से इसमें सम्मिलित हुए हैं. प्रतीक मजूमदार सर भी हमारे साथ हैं, प्रोडक्शन कंसल्टेंट है इंडिया आर्ट फॉर द वर्ल्ड. सर आप भी कुछ ऐड कीजिए इसके बारे में, इस इंटरेक्शंस में आपने कैसे और कैसे सहयोग कर रहे हैं इसमें. एक्चुअली आर्ट फॉर द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आज, बिकॉज दुखद है कि और ये सभी को दुख है कि 12 फिल्म मेकर्स, इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स इसमें जुड़े हुए हैं, और किसी न किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे मौजूद ना हो पाए.
बट AFTW की जो प्रेसिडेंट हैं एडिलिना वॉन फर्स्टेनबर्ग, शी सेंड्स हर बेस्ट रिगार्ड्स to the festival, to this film and its Asia premiere here. और I think AFTW Art for the World को मैं शॉर्ट में AFTW कहूँगा. AFTW का हमेशा रुख रहा है क्लाइमेट एक्शन की तरफ, क्योंकि एक तो UNDP सपोर्टेड भी है एंड जैसे रुपेश जी ने कहा कि ये COP15 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी वो सपोर्ट कर रही है इस फिल्म को. WAAS जो वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस है वो सपोर्ट कर रही है अपार्ट फ्रॉम पार्टनर्स. मेन पार्टनर गेल हैं ऑफ कोर्स, एंड दैट्स हाउ इंडिया बिकम्स अ को प्रोड्यूसर इन द फिल्म. The idea of this film has come from reality. ये ना तो साइंस फिक्शन है ना ही एवेंजर्स हैं. ये एक्चुअल वर्ल्ड को सेव करने की बात हो रही है. सेव द प्लैनेट हम बहुत सारी फिल्मों में देखते हैं, बट ये अभी हमारे लिए रियलिटी है. और हम सिनेमा को हम हमेशा मानते हैं कि एक मीडियम होती है जो आज के टाइम को, या जिस दशक में वो सिनेमा बन रही है या जिस साल वो बन रही है उस टाइम को रिफ्लेक्ट करे. मुझे नहीं लगता, एंड दिस इज़ ये शेयर्ड बाय ऑल दीज फिल्म मेकर्स जिन्होंने शायद अपार्ट फ्रॉम नीलामाधव पांडा जी एंड अ कपल ऑफ अदर फिल्म मेकर्स, उन्होंने कभी क्लाइमेट या वाइल्ड लाइफ पे या इस तरह के सब्जेक्ट पे कभी फिल्में नहीं बनाई थी. और एक बार में जब उनको अप्रोच किया गया, दे सेड यस फॉर दिस फिल्म बिकॉज एवरीबडी फेल्ट एज इंटेलेक्चुअल्स और ओपिनियन लीडर्स लेट्स से या क्रिएटिव पीपल इन दिस वर्ल्ड दैट ये कहानी कहनी चाहिए, ये कहानियाँ कहनी चाहिए. और जैसे मानव ने बिल्कुल सही कहा कि ये लिविंग रूम कॉन्वर्सेशंस और डिस्कशंस का टॉपिक हमारी ये होनी चाहिए, एंड कंटेंट का सबसे बड़ा हाथ है इसमें. थैंक यू. फेस्टिवल के पास. थैंक यू सर. प्रतीक सर, अभी फिल्म के बारे में हम लोग इसके पहले वाली जो पीसी थी उसमें काफ़ी इमोशनल मामला था. एक फातिमा फिल्म थी, सर ने एलिफेंट के बारे में भी बता करके सीन को काफ़ी इमोशनल किया. उसका ट्रेलर है तो, लेकिन चूंकि जल्दीबाजी में शेड्यूल हुआ हमारे पास नहीं है. नो इशू. और आप लोगों से अब आमंत्रित है सवाल पूछें. मानवेंदु सर, स्पेशली आपका से सवाल होंगे, चूंकि कैसे आपने इसको इमोशनल बनाया. चूंकि घटनाएं तमाम जानवरों के साथ भी, मतलब कहा जाता है कि जानवर जैसा व्यवहार मत करिए, आदमियों के लिए कहा जाता है, बट वो तो जानवर हैं. अब जानवर जैसा हम उसको कैसे समझें, इसको एक्सप्लेन सर कुछ रूप में करें. और सवाल हम आपसे की तरफ से आमंत्रित हैं सर. हाँ प्लीज. Sir, my first question, there are a couple of questions. My first question is to Mr. Rupesh Kumar. Sir, was this a part of CSR activity on the side of Gale? If so, what are the other projects you've undertaken under the creative head? And the second question is to Mr. Manbendu sir. Sir, will this movie be coming on OTT platform also? Because most of us have missed it, and I was just seeing the brochure of the movie. So it has multiple stories from across the world, like you were telling. So everything looks very intriguing. So will this be available on OTT or will it be on theaters? What is I'll take this one first. Yes, I mean that's the plan. But then once the film is done doing the circuits and all, we are already planning to talk to various platforms across the world. There is a tie-up which is already in place in Europe. Sadly, that platform is not there in India. So eventually, all these countries, especially from where the filmmakers are, they'll be tapped and it will be released in their respective OTTs. वो कौन से OTT में कब होएगा वो बोलना मुश्किल है. अभी वो चल रहा है discussions. It will come out for sure. मैं एडिशनली कुछ ऐड कर सकता हूँ इस पर, क्योंकि हमारा जो इंटरडिपेंडेंस जो इससे पहले फिल्म बनी थी, that film was also similarly 11 filmmakers making on climate change and all. So the idea of AFTW and this entire project has been to reach the masses, and and TV becomes one such medium. So a lot of TV networks are part of the discussions that happen with AFTW. So Asia will also feature in that.
But obviously, right now it's a festival release, so to speak. So once the festival season, draws to an end, then those will happen. But yes, I can proudly say that the last film we made was 500 million eyeballs in 2 years. So yes, the idea is to get it out. या ये जो जितने भी स्टोरी टेलिंग के अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, ये हमारे कम्युनिकेशन हवा बदलो इनिशिएटिव करके है हमारा एक हवा बदलो, हाँ, गेल का एक इनिशिएटिव है, कम्युनिकेशन अवेयरनेस इनिशिएटिव, सोशल अवेयरनेस इनिशिएटिव. उसके अंदर हम बहुत सारा इस तरह के स्टोरी टेलिंग कंटेंट खुद भी बनाते हैं, और उस तरह के कोई बनाते हैं तो हम आइडेंटिफाई करके उसको प्रमोट सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं. तो दिस इज़ अंडर दैट, दिस नॉट प्योरली फॉर CSR. के अंदर हम बहुत सारे काम करते हैं. आई एम नॉट द CSR person per se, but we do a lot of CSR activity for environment, under tree plantation, for solar panel making, renewables में हम लोग काफ़ी ऐसे भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. क्लीन एनर्जी को वहाँ काफ़ी इम्पेटस है. सो ऑल ऑफ दिस लीड्स टू क्लीन एनर्जी फॉर क्लीन एनवायरनमेंट. तो उस के तहत हम ये सारे जो कंटेंट हैं उसको सपोर्ट करते हैं. Sir, very good evening. Again, this is to Mr. Rupesh Kumar. Just I wanted to know the pros. I mean, it's optional because today's I don't want to name the richest of people in India. They are now venturing into the blue hydrogen, or sorry, clean energy. So already their other collaborative industries have already polluted whatever has to done. So and now it has become as a whatever the more than climate change or planet save, it is now considered as a business. I mean clean energy or renewable energy. So how much it can really, when it is considered as a business, how much it can really save the planet, I am not sure. But it's optional whether you wanted to say or anything, because I don't. Thank you. Sir, it's a part of business responsibility. So I think most of the corporates now are actually pulling in as a part of business responsibility for clean environment and sustainable practices. It's also mandatory, and it's also even most of the time it's also voluntarily. So अब कहीं पे I can't comment कि it's all the time for good cause or bad cause, but that's you to decide. But I'll not comment on that. Just to add on, now I think ESG compliance also for every corporate is required. But I am not sure how much that ESG has taken. Though everybody are saying we go very much for investment, other purpose, ESG ranking, but everybody says it's still in embryo stage. How much its compliance is fulfilled or not? Till the time we are positively working on content and positive content awareness, and we are positive about it, I think it's good enough. Gail, we should talk about film and content और corporate affairs are different thing. I mean वो सब ज़्यादा इशू नहीं है. ये फिल्म फेस्टिवल है तो हम लोग फिल्मों के बारे में ज़्यादा, क्यों सर? नहीं, दोनों रिलेटेड है. आई मीन द फन पार्ट इज, आप अगर फ्लाइट लेते हैं, आप इंडिगो से जाओ, लास्ट में उतारते वक्त बोलते हैं ना, इंडिगो में ट्रैवल करने के लिए धन्यवाद, या विस्तारा में ट्रैवल करने के लिए धन्यवाद. तो उसी चीज़ के रिलेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हर का कॉर्पोरेशन को एनीथिंग फ्रॉम 1%, 2% to 4% दे आर मैंडेटेड टू स्पेंड. ओके, बट लेट अस नॉट टेक इट अवे फ्रॉम देम दैट जस्ट बिकॉज इट वॉज अ मैंडेट थिंग दे डिड इट. Actually, GAIL has supported this film, funded it. This film has been able to become reality because of GAIL. They have been one of the prime reasons behind it. So, इस फिल्म को फंड करने के लिए GAIL को धन्यवाद. एज अ फिल्म मेकर आप R&D करते हो. जब आप R&D करते हो तो आपके ध्यान में आया क्या कि कितने परसेंट, जैसे GAIL कंपनी चलती है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां पूरे इंडिया में पोल्यूशन बढ़ाती है, तो कितना परसेंट डेली पोल्यूशन बढ़ता है, और आप जैसे लोग काम करते हैं एज ए R&D, कितना परसेंट आप उसमें अवेयर लाके उसके अंदर इंटरवेंट करके पोल्यूशन को ठीक करते हैं? देखो, यू टॉकिंग अबाउट कार्बन फुटप्रिंट्स. यस. टेक्निकली, सो एज अ कंट्री इंडिया इज स्टिल इन नेगेटिव. मतलब इंडिया इज ऑन द प्लस साइड. यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस एंड अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस, दे एक्चुअली बाय carbon footprints from India.
बिकॉज हम अभी तक पोल्यूशन के उस कागार पे पहुँचे नहीं हैं. Now I'm speaking as a company. If you start looking at it as a Delhi, Bombay, or a Goa or a Bangalore kind of a scenario, yes, we are in dark waters. But then, as an entire subcontinent, if you see and average it out, we're still very low. Okay. But having said that, इतने calculations में घुसने का ज़रूरत नहीं है, because it's not about we here sitting in a Bombay or a Delhi or a Goa or some place. It's about spreading awareness to the entire planet. Everyone needs to know this. And the beauty is, this is 12 different countries speaking 12 different languages. So ऐसा शायद ही कोई इंसान इस धरती पे होगा जो ये सारे लैंग्वेज समझ सकता है. और उसमें से एक मैं बता देता हूँ, द फन पार्ट वाज, एक उसमें से ब्राज़ील से है, और वो जो इंसान है वो अमेज़न फॉरेस्ट का एक ट्राइबल लीडर है. यंग गाय, आई मीन यंगर देन मी, अराउंड मस्ट बी अराउंड 45-46. मैम 47-48, तो 2-3 साल छोटा है. वो भी आया हुआ था. ही कैन नॉट कम्युनिकेट इन एनी नोन इंटरनेशनल लैंग्वेज. वो कर ही नहीं सकता, वो कोई लैंग्वेज नहीं जानता है. बट देन वो कैमरा का लैंग्वेज समझता है. कैमरा उठाया और उसके यहाँ पे ही इज मेड सच अ ब्रिलियंट फिल्म ऑन फॉरेस्ट फायर्स. तो उसमें क्या है कि एक छोटी सी इंसानी गलती किस तरीके का हंड्रेड्स ऑफ एकर्स को जला के राख कर देती है, और साथ साथ में सो मेनी एनिमल्स पेरिश बिकॉज ऑफ दो स्मॉल मिस्टेक्स. सो लेट्स नॉट कमिट दोज मिस्टेक्स. बेसिकली ये मैसेज था. अमेजिंग फिल्म. थैंक यू. Sir, my question is that climate change is a very important topic, but we see that it is often neglected by the commercial mainstream movie industry. So what should be done to promote this topic, the filmmaker? I mean, you've answered your question yourself. The moment you tag it as commercial, it will have a financial implication to it. So any producer or financier who's making a film will look at the ROI. So why should he bother about these things? But in our case, I don't know how much you guys have read into Neelam Adha Panda. Obviously, most of you would know him. But he has, and likewise we all have, because we are one organization. We have been focusing on making good cinema, entertaining cinema, with a sharp focus on social development messages. हमारी सारी फिल्में आज तक, and we have produced 7 full-length features till date, all in Hindi, and a zillion short ones actually. Everything has a focus. So, I mean, to answer your question, each to oneself. Maybe people will slowly get aware. Yes, sir. हाँ, good बोलिए evening, sir. environment वाले. We have environment is part of life, and it's very important of the individual to see how to aware and how to protect the young generation. When UN COP happened in 2012 in Hyderabad, there was parallelly at a biodiversity film festival. I was curating and I was anchoring for 5 days. I was seeing the worldwide films on environment, especially on water from Africa, and then Baikal Lake of Russia, second largest freshwater lake in the world. What all happens in Baikal Lake around the year? How when it's freezed, how people go on hunting the seals, killing the seals, how do the fishing. Why I'm telling this? You have made this film on environment. Environment itself a huge ocean. You know, on different aspects, like as you said, forest fires, deforestation, save water, and how brilliantly you have made. And you say it's not a documentary; it's a fiction-based film. It's still more tough to make environmental fiction more based. How are you able to rope in all the 12 award-winning filmmakers on environmentalist? Usually they can't easily rope in for such a projects actually. So as Pratik was explaining, we are filmmakers, not environmentalists. Yeah. But a few of us, so if I have met all of them in Rome this time, so just two or three of us had actually made any serious cinema on environment, on anything concerning environment. But others, I mean, there are hundreds of topics, so people had done wonderful cinema, but not in the field of environment. Yeah, that's But then when Art for the World approached them, since it's a raging issue, there was not a single person who even had a hint of a doubt.
They simply jumped into it. I think as storytellers of our times, I dare say that we have been missing the point for some time now. This would not have been the case, for example, if it was anything to do with commerce or immediate impact on humanity. I think we would be making 100 films a year on this topic. The problem is that it's a slow burn issue, and people think that it is still not upon them. It's only those who know. So the responsibility of making or telling the stories, and of course, like Rupesh ji also mentioned, that you have to tell entertaining stories, because only those that tug at the heart would percolate to the mind. So ultimately, if there are a few such organizations or few such filmmakers who started making these telling these stories, even as a short film of 10 minutes, I'm sure there is a time when Avengers had an environmental theme this time, the end game, for example. And we've just been through COVID. I'm sure there's a lot of filmmakers. Like I said, COVID would spew a lot of stories. Yeah, it changed. But changed the entire world. Exactly. But climate change also is changing the entire world. COVID Right. change is different. Climate change is also different. I agree with you. Exactly. So sea levels rising, for example. Yes, In 2017, he mentioned Kadvi Hawa. We were part of this film Kadvi Hawa that Neela ji made, which was about drought and sea level rise in the same film, starring Sanjay Mishra ji and Ranveer Shori. There was a film on the shadow of it that we made, which was about sea level rise, and says the same thing that today's headline is talking about in terms of how much of Bombay will be underwater and so on and so forth. So the thing is to pick up these things from the news, to have some domain experience, to have some research, to be able to tell real stories, I think is the responsibility of filmmakers, and they're going to do it. Good thing. Is there any research done before the making this? Of course. I mean, interactions lots with of research in each country, with a climate action activist from the United Nations assigned to, let's say, every 2 or 3 films, helping the filmmaker tell the story without factual error, without and with hope, because that's the other thing, that we were very clear that we are not going to tell apocalyptic stories. So if you see, and which is the sometimes it's tempting to tell a dark story, to say that okay, the world is going to end, and that is therefore true. You have to accept it, which we can't see. But what we don't, while accepting the fact that we are deteriorating, let's say if it is about the air pollution in Delhi or whatever, we have to have, as human beings and humanity as a whole, the hope to be able to avert this crisis, to be able to override, and with individual action. So I think individual action comes from watching and saying, oh, this guy is saying the right thing, let's do it. So that talk to action, connection needs to be made, and that is part of what Gale does as well, a lot, if you see their content. And Sir, very few people do this. This was presented in the UN COP, which is happening in Egypt recently. This film was being there. No, this is a COP15. I'll tell you exactly so that there is no factual error on this. This is under the auspices of UN's COP15, which is a Conference of the United Nations on Biodiversity, not the This will COP. be showcased in Montreal in COP15. which How will was the happen in audience December. reaction, the press, media, that film? We have to still see, right? COP15 is going to happen. No, it hasn't happened. It has to The happen. world premiere happened in Rome. The Rome International Film Festival. That was last month. And post that, it has happened in Florence. Overall, Milan. how was the feedback of the film, sir? In Rome. Yeah. Well, you see, a lot of big filmmakers were there. Otherwise, also not the filmmakers themselves. So I was lucky enough to be there. So the film received a tremendous response from all and sundry. Their media was truly excited. They made it a point to come across and congratulate each one of us. They made it a point to speak to me directly and
especially with me, a lot, because ours was probably the only film which is a fictional sort of a story where we have roped in actors and all. Yeah, it's very rare to find the environmental film in the fiction form. It's very rare, very rare. So you like to promote your film in other international festivals across India? It will do the circuit Yeah. across Asia as well as across other international festivals. Coming to Gail, sir, how about your promotion of this film in other format apart from other festivals? You like to have any channel telecast or broadcasting from Doordarshan? We are, being here, we are already promoting it. You're promoting it for 8 days is a different story. Among but 250 films from different countries. I think mostly it is being organized and promoted by Art for the World, which is NGO, and they have tied up with a lot of TV channels, and they have tied up with universities, schools. The work is on still. And the names we do not know yet, Sure, but the work is on. Yes. Thank you, sir. Congratulations for making such a wonderful Thank film. you. Thank you so much. Thank you. आपका ये कॉन्फ्रेंस में आने से मुझे बहुत कुछ पिक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिला. मुझे ये लग रहा है कि ये मैंने इंफॉर्मेशन पहले मिली होती 3 घंटे पहले, क्योंकि अभी आप जो यहाँ बोल रहे हैं अभी पिक्चर आपकी वहाँ चल रही है. जी जी. हमको बहुत बड़ा दुख है कि मैं आपकी पिक्चर नहीं देख पा रहा हूँ. तो ये देखने के लिए आप कोई OTT प्लेटफॉर्म में आप दिखा पाएंगे या नहीं, वो भी है? OTT में भी आएगा एंड फ्री टू एयर ऑप्शंस भी होंगे लाइक YouTube, बट नॉट राइट अवे. 6 महीने के बाद 1 साल इट विल कंप्लीट द सर्किट. आप लोग कल भी आए हैं सर? तो मैं ये बोल रहा था नॉट Because- पर्टिकुलरली मैं रहूंगा बिकॉज आई जस्ट. तो अगर आप कल रहे सर, चूंकि आपका मतलब शेड्यूल में नहीं था और आप एकाएक हुआ, तो कल लोग भी अगर आपसे, चूंकि मूवी ऐसी है जिस पर बात Correct, करना हाँ, चाहेंगे ये मीडिया वाले, नॉट ये मैं बोलने जा एट रहा द था, फॉर्मल बोल लेवल, दिए साहब, बोल दिए. इनफॉर्मली यस, हम आई विल इंट्रोड्यूस देम कि भाई ये इस फिल्म पे काफी हुई है, जो लोग देख भी रहे होंगे वो भी, तो कुछ उस पर और भी बातें होंगी, बात थोड़ा और दूर तक Correct, जाएगी तो अच्छा रहेगा. श्योर. सर और कुछ है या फिर उनको बढ़ाएं? बस जो बोलना था आप बोल दिए. यस सर. और अगर आप देखना चाहते हैं तो जो चल रही है तो आप सर Please जा भी जाइए, अभी सकते हैं. बहुत सारे You can शॉट्स join. बाकी हैं. लेकिन वो लोग ना इंटरनेट देंगे. सर वो अलग इशू है, हो जाएगा सर, आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि मिल जाएगा ठीक मौका. है. सर एक बात हो, इधर ही संबंध में मिलने के टाइम सर जो केरला में कुछ एलिफेंट का उसका थोड़ा डिटेल बताइए सर. इट्स रिलेटेड टू दिस फिल्म. Yes. अच्छा सर प्लीज शेयर करिए. ये जो एलिफेंट इन द रूम है द इंडियन फिल्म एज पार्ट ऑफ द 12 फिल्म्स, तो ये जो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, वहाँ पे एक्चुअल वहीं की एक सच्ची घटना पे आधारित है. ओके, सो उसी ट्रू स्टोरी को हम लेके उसको वी मेड इट अ पार्ट ऑफ आवर स्टोरी एंड वी यूज्ड इट. हम इसको शूट भी किए हैं वहीं केरला में. द लोकेशन वाज रफली 12 to 15 kilometers away from the outskirts of Kochi. Sorry for the introduction. I am from Kerala, so I know the. Wonderful. So 10 to 12 kilometers away from the outskirts of Kochi, वहाँ पे एक विलेज है. अभी the name was really difficult to pronounce. वहाँ पे शूट किए थे हम. So आपके जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं अनूप कृष्णा, he was a big help. He is known to us otherwise also. He is a friend. So उन्होंने help किया. The government itself, they helped a lot in terms of facilitating the production, in terms of some logistics, but all the permissions and all, because shooting inside forest areas is generally not permitted. So your government anyways helped us a lot. मेरा सवाल प्रतीक जी से है. जी. जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं, ये जो केरला में केस हुआ था वो काफ़ी नेशनल न्यूज़ में आया था उस टाइम पे, बट ओवर द टाइम दीज थिंग्स गेट नॉर्मलाइज्ड. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते भी नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और इसमें मतलब इसमें दिस इंक्लूड सम फॉर्मर प्रेजिडेंट्स ऑल्सो. तो आप फिल्में एक माध्यम हो गया इस चीज़ के लिए, और आप क्या सोचते हैं कि क्या इनिशिएटिव्स आपकी NGO ले रही है या आपको लगता है लेने चाहिए कि इस चीज़ को और बढ़ावा दिया जाए कि लोग इस कंसर्न को सीरियसली लें और माने कि हाँ ये उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अगेंस्ट एक्ट करना. देखिए, इस फिल्म का बनना और इस फिल्म से पहले जो फिल्म हमने बनाई थी इंटरडिपेंडेंस, सिमिलर अगेन
Neela ji had made the Indian short, and there were different. Some of those filmmakers have again come over. तो ये साल दर साल इनफैक्ट ये एफर्ट रहता है एट AFTW एंड आर एसोसिएट्स, और ये सब लोग अब एसोसिएट्स बन रहे हैं एज वी मूव इन. तो देखिए ये जो आपने, आई विल ट्राई एंड कंटेक्चुअलाइज, जो आपने पहले कहा वो साइंस ऑलवेज, वी बिलीव दैट साइंस एंड reality checks and truth will always prevail. There are a lot of people who will oppose it, or will try to, or maybe they are ignorant or whatever. But the idea of climate change is a reality, and that's why I think a lot of voices that are opinion leaders and intellectuals across the world, including Hollywood, Leonardo DiCaprio being one of them, and so on and so forth, across everybody has been very vocal about it. And what we are doing is nothing unnatural or abnormal or ahead of its time. It's actually just the right time to talk about it in one voice, and that is what the effort is. And we will continue to do this. Is the mandate that we have. And we have the support of some of the best organizations in the world, who also have scientists in their panels, like Gail themselves. They belong to science, they are of science, and we truly believe that is never going to be an issue or a roadblock. Like we said, that these are creative minds, right? They're not scientists. Most of these filmmakers do not have science background. Some of them might, but they still understood what the problem is when they were told of it, and they could see around them, and they have their eyes and ears open, and they read the news, and that is all that it takes. Then Creative part, can I ask out of UN SDG goals, related to your research and exposure, which SDG goal is not much come to light through documentary or feature films like that? Can you throw light on that one? SDG goals, they cover a lot of things, not only environment. They have livelihood, they have housing, they have other kinds of health and education, and they have entire charters. So obviously I can't give you a list like that, but the unique part which you want to know about is the fact that 12 filmmakers from 12 different countries have collaborated to make this one single film, which now has a global voice. The best part is, if you see this film, you might not actually understand 10 or 11 of it. In fact, if you don't understand Malayali, you won't understand all 12 of them. But if you just watch them, you will get the message through and through. You won't miss a single frame which you cannot understand. So that's the beauty of the language of audiovisuals. It is all pervasive. Thank you. ओके, थैंक यू मनविंदर सर, थैंक यू प्रतीक सर, थैंक यू रूपेश जी. आपकी फिल्म में हम लोग भी साथ हैं, IFFI टीम एंड इंटायर IFFI, आई थिंक जर्नलिस्ट भी साथ हैं आपके जो कॉज है. और ओनली ग्रेटिट्यूड फॉर यस सर, ये तो सबका है, आप कर रहे हैं, हम लोग भी आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू वेरी मच. और सर हम आपसे अनुरोध करेंगे, अगर जो लोग भी अलग से बातें करेंगे तो आप काइंडली उनका भी सहयोग करेंगे. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you so much. थैंक यू.